My message to all the anti-national element is that wherever you are, anybody who is the enemy of the nation, wherever he is, in whichever form he is, he will be identified, targeted and neutralized. I think the entire Saifullah group जो था वो इस पूरे एरिया की बैकबोन था एंड एक फलक्रम जिसे कह सकते हैं जिसके इर्द गिर्द सारा टेरर नेटवर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश था एंड इट वाज वर्किंग under his leadership and guidance, and I think elimination of this entire group, 4 earlier and 3 now, all 7 of them, I think it's a huge success for the entire security forces, all of us, the army, the police, the CRPF and all other agency. And I think it's a huge success for all of us. कितनी बड़ी सिनर्जिकल विन आप इसको मानते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस का एक 326 दिन लंबा ऑपरेशन जिस तरह से आपने बताया, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सभी एजेंसीज के लिए। 100%, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो मैच नहीं जीत सकता है, सारी टीम अच्छी होनी पड़ती है और टीम में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होना पड़ता है। एंड आई एम प्राउड टू से दैट I think in our area we have the best possible synergy, integrity, then the efforts. They are so united, collaborative and collective that there's no difference between me, IG Saab and anybody else. सर अभी भी कुछ आपको लगता है आतंकी इस इलाके में एक्टिव है और उसके लिए क्या कार्रवाई है? हाँ, जैसे कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने देखा है कि रेमिनेंट्स अभी भी हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो हैं टेररिस्ट, उनका जो ग्रुप मेन था वो क्लियर किया है हमने, और जगह भी हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड ऑपरेशंस विल कंटिन्यू, विल ऑलवेज कंटिन्यू एंड यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ भी वो होंगे we'll find them and we'll neutralize them. Gentlemen, at the outset, let me state this, that this recently concluded Operation of Trashi is the perfect example of perseverance, clarity of thought, proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months, an integrated approach of each and every force and each and every agency working over here. And most importantly, it is the perfect example of seamless coordination at all levels, from the troops working on ground, from all of us sitting over here, between the corps commanders, the ADGs, IGs, between the DGP and the army commander. And let me tell you that everybody contributed towards the success of this operation decisively. All the resources which were available to all of us, all were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. And what you see, the success you see today, is actually the reflection of the strength of our unity of efforts. You know, this particular operation, though it started on 14th of January, and our first contact was established on the 18th. And after that, we established multiple contacts on 18th, then on 22nd, then on 25th, then on the 31st, then on the 4th, and then on the 8th. But our aim was not achieved. But together, we did not lose heart. We had the clarity of thought and we kept on planning and preparing for the operation. Every day we used to sit on the drawing board, we used to reorient ourselves, realign ourselves, redeploy ourselves, because together we were dynamic in our thoughts and in our actions. We would quickly discuss any hint which used to come from any of the agencies, any of the forces. We would corroborate it and redeploy ourselves and start working again. And वो हिंदी में कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो मुश्किलें भी जो हैं वो सिर झुका देती हैं, और मुश्किलों ने सिर झुकाया. We got our first success here on the 4th of February when we killed Adil, and then we kept on we were in constant pursuance of our aim, and it was on the 21st within these operations when, you know,
the SSP Kishtwar, Mr. Naresh, he gave the input to Brigadier Sunil, who is the Commander 9 Sector, and we corroborated it through all the agencies which are present here and working over here. And then the operation was launched. Collectively, jointly, with all the elements which we had on our disposal, that is the Army, the Special Forces, Police, the SOG, the CRPF, and everybody. And collectively, you would have seen that the way we operated in a very, very calm, composed, collective, collaborative manner, that the kind of success we achieved, especially, without suffering any casualty, any harm to any of our troops, except for the brave dog Tyson, who actually initiated the operation, and that is how collectively we could conclude that operation. But let me tell you one more thing. What you see is not just the effort of last 1 month only. It's been months and months that we were collectively working on this. We were carrying out operations relentlessly, and there were challenges in front of us. Challenges in terms of terrain, challenges in terms of weather, rain, it snowed, there were landslides, and you would have seen in any of those conditions, you would have seen all of us standing together like a wall and moving together, and that is what reflects our collective and collaborative efforts. So it was a continued approach towards the operation. We also knew that such long operations could set in fatigue in our troops. So we used to plan in a manner that we had enough troops to rotate them. We had enough troops up our sleeves, either to be dropped by helicopters or to walk the kind of terrain it is there. It used to take us 6 to 8 hours, but we used to reach there. And just imagine so many different forces operating in such a small area, what kind of coordination and collaboration is required. And that was achieved at every possible level. And I think that is the strength we have, and that is the strength which gives us more confidence that come what may, we'll keep operating like this, and we'll keep neutralizing terrorists, whosoever comes in our area, which is of responsibility. And not just this, you would have seen that the Delta Force, with the support from White Knight Corps, from Northern Command, and from the support of each and everyone who's sitting here and who's not sitting here also, we are just representing our forces and agencies, but each one contributed that in the month of February, we have been able to eliminate 6 JM terrorists, and on both the extremes of our area, one in the area of Udhampur and other in the area of Kishtwar. And together we promise you that we'll continue to do so. And to the Awam, I would like to say that मुश्किलों और चुनौतियों की आंधियां जितनी मर्जी तेज हों, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने हौसलों के चिराग कभी बुझने नहीं देंगे. एंड ये हमारा एक जुनून है, ये हमारा हौसला है, और ये सब कुछ जो हम कर पा रहे हैं, this is all with the support of each and every soul who is in this area. And I am so proud of our bonding which we have today together, the integrity, the unity of effort which you see not just in the operations, in the HADR missions, and everywhere and anywhere, whenever there is a situation of crisis, we stand together, we will stand together. And my message to all the anti-national element is that wherever you are, anybody who is the enemy of the nation, wherever he is, in whichever form he is, he will be identified, targeted, and neutralized. Infiltrated into Indian territory in the month of April 2024. Since then, this group was engaged on 17 occasions, and over the period of last 1.5 years, we were able to neutralize all of them. And yesterday was the culmination of this 1.5 year long operation.
मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफ़ी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफ़ी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। और यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहाँ पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयाँ भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी बेहतर कार्रवाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, जैसे मैंने बताया, टोटल 17 दफ़ा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे और जनवरी में 4 दफ़ा और फरवरी में फिर 2-3 दफ़ा इसको इंगेज किया गया और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। और एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है। और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज़ बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया और उसको उसके अंदर ही कन्फाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने एक छोटे जोग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया। बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन। ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट्स थे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सके।